empathy और sympathy ଭିତରେ difference କଣ? सिंपाथी में तुम दया देखी एम्पाथी हूँ मु से जगह निजको फील करी जे तुम को पोजिशन है धर तुमको भोक करुच तो सर भोक करुच्ची घरे खाइबा को नहीं ये नहीं हो बाबा तू 500 टका ने खाई दैट इज सिंपाथी एम्पाथी मीन्स आई एम रियली फीलिंग दैट से भोक समय एक्चुअली कौन फीलिंग हुए आ मु ट्राए करी ए भोकटा आउ केबे न हो बुझी होची बाकी मु सबुदिन 500 ପାଇଁ 500 देई परिबी मु एमिति बाटटा करिवि जे तो सबुदिन खाइबा को कार्यक्रम एटा होची सिंपाथी और रियल माने रोगटा को निजे फीलिंग करियो सिंपाथी होची जेतेबेले तोर गोड़ भांगी गला जो आसीबे बंधु बांधव आसीबे हॉर्लिक्स नेबे सेटा एम्पाथी जो सिंपाथी बुझी होची एम्पाथी होची जदि तमर किछि हैला तमर के बंधु बांधव आसीबे से निजे घरे रही सब काम करी तम सेवा करे दैट इज एम्पाथी बुझे जदि हमें दीटा को डिफरेंशिएट करिवा एटा होची ने रियल मीनिंग सिंपाथी तो समझ देखे हैला सेउ किले नहीं जिवा हॉलिस्ट गोटे धर तापको दिखाई करी पयस फुलो तोड़ा टाइम नियो गेट वेल सुन ओके किनो गेट वेल सुन हवा पई जो कामटा अछि मु तोरा बेडेड हेछि मोर सब काम जदि जी करूची दैट पर्सन इज एम्पाथी तो काउंसलर से टाइप then concreteness it refers to the ability to pay attention to what is said by the client rather than drawing the implication from what has been said normally after listening to somebody we frame our interpretation from what has been said and also draw our conclusion but in concluding this is not going to serve the real purpose focus should be given to the fact as to what exactly the client wants to convey. Otherwise, any easily offered advice may not be work and it is also unlikely to be helpful, keeping in the view of requirement of the client. Concreteness means there is a eye contact and listening directly from the client. माने मो पाखरे से धैर्य थिबा दरकार तमे बहुत दुख रे मते फोन करछ your problem you feel what is the kind of problem is there तमे सेति प्रॉब्लम में पड़छ बोली धर मते फोन कर बट व्हेन यू आर कॉलिंग आई एम जस्ट लाइक ए कूल आई एम नॉट हैविंग पे एनी अटेंशन सपोज आई एम एट दैट टाइमिंग आई एम वाचिंग इंडिया पाकिस्तान मैच ओके एंड इट इज अ स्लॉग ओवर चली सेता तम मते फोन करछ तम कह हां हां सब हे जो so at that timing I am just listening but I am not paying the attention what you are really saying तो से समय जो कंक्लूजन ता से सारे कंक्रीट कंक्लूजन है because my mind is busy somewhere and you are talking only my our organs are there to active to listen what is up okay but I am not paying the attention what is your real problem तो एटा जदी हमें कंक्रीटनेस जदी हबा ताले फर्स्ट ऑफ ऑल जने जेतबे कहूची ताको फुल सुनिबा को पड़े what the person is saying ताको एनालिसिस करा जाय मने मने तापर सॉल्यूशन दिया तरतर नहीं कि तारा सॉल्यूशन दे देखिए तार कस्टमर ओरिएंटेशन सर्विस रे कौन हुए जो लोक था प्रथम शुणती सब तमें जिते गाड़ी दिए पूरा काम धैर्य लेवल पूरा काम है शुणवे तापर से सॉल्यूशन काम है शुणी से गाड़ी दौथे किंतु पाटर के गाड़ी बाहर वे ऑफ टॉकिंग एत स्लो थी एत जेंटल थी अन्य लोक निजे गिल्टी फील करेंगे मुझे कौन कहीदेवी सॉरी कही Congruence, the role of the counselor is to touch the emotional aspect of the client mind, encouraging him or her to talk about the deepest emotion feeling. Conflict and dilemma that lie at the core of the problem. The counselor is expected to be warm and responsive to the feeling of his client. The client feeling ta bhi बुझिबा दरकार तुमे धर गोटे जिनस कांत पेन हो कि जस्ट लाइक एनी डिवाइस मोबाइल तमे कांदुथिबो
तो मु एज ए पेरेंट हिसाब से कौन कहिबे हां तोर कौन दरकार ये किंतु से जो इगरनेस टा थिबो जो मागिबार प्रोसीजर टा थिबो अन्य जनकर तो सेई जिंसटा को भी बुझिबा दरकार बुझिला तो सेटा को कुहा जीवो कोन ना कॉन्ग्रुएंस आमे जीवा इमोशनल एस्पेक्ट को तार बुझिया पड़िबो आ ताको एनकरेज भी करिया पड़िबो से जगह the counselor is expected to be warm responsive to the feeling of his client. He has to create a respective climate in which the client will reveal his very personal matter. तो एमती एनवायरनमेंट मते बनेवार अछि तार पर्सनल मैटर भी मते शेयरिंग से करियो the term congruence indicate the level of honesty sincerity commitment honesty रहिबा दरकार sincerity commitment genuineness रहिले then आउ जने ए जिंस कहि परिबो सम by congruence Roger mean the therapist total non-judgmental acceptance of the client if the client is able to release although disturbed thought of feeling before the therapist or counselor then he can understand and identify the real causes तो सेतिके ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट करले से तार सब जिंस कहिला परे देन काउंसलर बेस्ट सॉल्यूशन दे परिबो sense of humor is what it is a part of the counselor can play a significant role in creating relaxing atmosphere in the counseling room this will also help the client to feel some kind of lightness in the mind making the situation easy and creating environment of relaxation for the client is very important जेतो हमें सिनेमा हॉल जाउचे सेते एसी नथियो माने तुम इंटरेस्ट हबनी मूवी देखिया आगरो जेतरे ओडिया मूवी पड़ता गरम बिंचना मारिक जाउतरे ओके किंतु हेलो यू डिड इट ओह कोई दिन ओके जेमने मु कहली हमरा सेंस ऑफ ह्यूमर मींस वी हैव टू क्रिएट अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट खरा दिन में जदि एसी न लगी तुमको अनकंफर्टेबल लगी बुझियो जेतले आमे सेही प्रॉपर वे रे न बसिबा लिसनिंग करिवा गेन करिवा हबने पेट फुल नथिले लेक्चर सुनिया को बोर लागे you are sitting you are attending the classes but you are attending the classes for the attendance but एटा तुमको पॉजिटिव माने आउटकम किछि दबो ना लेक्चर रे किछि दबो ना स्टूडेंट रे किछि कारण तुमे किछि लिसन कलानी तुमे देखुतबो केपे सरीबो आमे जिबु खाइबो और लेक्चर को भी सेतला बोक करथबो जदी से भी कहबो केपे मु गपी हारे आ जिबि सीधा जाई खाइ बुझिलो ताले सेटा पॉजिटिव इंपैक्टनेस पड़िबो ना the sense of humor बनेबा कहले it should be a good healthy environment right okay ability to extract the information not all the counselor are equally effective in extracting the real sources of the problem from the client if the client is not convinced about the nature temperament of the counselor and it is not satisfied with the behavior interaction and attitude will never reveal true feeling okay so in the absence of a healthy client counselor relationship there is no possibility of continuity for the counselor यदि हमरा सेमती हेल्दी रिलेशनशिप हबो नाही फर्स्ट इंटरेक्शन में देन काउंसलिंग प्रोसेस आगु जीवो पता ट्रीटमेंट किछि हबो नेक्स्ट टाइम रे काउंसलर बुझिला तो एटा थिला तर
कैरेक्टरिस्टिक्स सब थिला तो नेक्स्ट क्लास में इंपोर्टेंट स्किल ऑफ काउंसलिंग और बेनिफिट टा पड़ी ठीक है ଆଉ କିଛି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଯାଇଛି ନାଇଁ ଦିଟା ଆଉ ଥିବ ଥିବ ଯେ ମିଶିକି ରହିଯାଇଛି କହିଲେ